Namaste. My name is JVN Rishi Gautam from Department of Journalism. Today's topic is nature of communication. The first point is it involves at least two persons. Communication involves at least two persons, a sender and a receiver. The sender is called communicator and the receiver of the message is known as communicate. A person who speaks, writes, or issues some instructions is the sender, and the person for whom the communication is meant or who receives the message is the receiver or communicates. Next is message is a must. A message is the subject matter of communication. Example: the contents of the letter or speech, order, instructions, or the suggestions. A communication must convey some message. If there is no message, there is no communication. Next is communication may be written, oral, or gestural. Communication is generally understood as spoken or written words, but in reality, it is more than that. It includes everything that may be used to convey meanings from one person to another. Example: movement of lips, or the wink of an eye, or the wave of hands may convey more meaning than even written or spoken words. Next is communication is a two-way process. It involves both information and understanding. Communication is not complete unless the receiver has understood the message properly and his reaction or response is known to the sender. Understanding is the end result of communication, but it does not imply agreement. Next is its primary purpose is to motivate a response. The primary purpose of communication is to motivate response or influence human behavior. There is no doubt that motivation comes from within, but communicator can also motivate people by good drafting of message, proper timing of communication, etc. To create understand, communication should be relevant to the situation. It must always be remembered that communication is a means of motivating and not an end itself. Next is communication may be formal or informal. Formal communication follows the formal channels provided in the organization structure. For example, the managing director communicates with the department heads. Say finance manager communicates to deputy finance manager, the deputy finance manager with accounts officer, and so on. In simply words, in formal communication, there is no direct communication between the managing director and the accounts clerks. Informal communication flows from informal channels of communication which are not provided in the organization structure. These channels develop among members because of personal contacts through working with each other. It flows up and down and also from side to side. Communication flows downward from a superior to subordinate and upward from subordinate to a superior.
It also flows between two or more persons operating at the same level of authority. Next point is, it is an integral part of the process of exchange. It refers to the exchange of ideas, feelings, emotions, and knowledge and information between two or more persons. यानी कि हमने इस वीडियो लेक्चर में ये जाना कि कम्युनिकेशन के जो नेचर हैं वो क्या हैं. तो पहला क्या था, इट इन्वॉल्व्स एटलीस्ट टू पर्सन्स. मीन्स कम्युनिकेशन की प्रकृति में ऐसा है, उसके जो नेचर हैं उसमें ऐसा है कि इसमें कम से कम दो लोग इसके प्रोसेस में होने चाहिए, तभी कम्युनिकेशन पॉसिबल है. नेक्स्ट क्या है, मैसेज इज़ अ मस्ट. मीन्स कम्युनिकेशन तभी होगा जब उसके पास कोई ना कोई एक मैसेज होगा. मैसेज की अनिवार्यता यहाँ पे है. थर्ड क्या है, कम्युनिकेशन मे बी रिटन, ओरल और जेस्चरल. मीन्स कम्युनिकेशन जो है वह इन तीनों फॉर्म में हो सकता है, रिटन भी, ओरल भी और जेस्चरल भी. फोर्थ पॉइंट क्या है, कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस. मीन्स कम्युनिकेशन जो है वह टू वे प्रोसेस है, वह कभी भी वन वे प्रोसेस नहीं होता है. अगर आप किसी को कुछ कहेंगे तो उधर से भी कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया आएगी. इसके बाद है, इट्स प्राइमरी पर्पस इज़ टू मोटिवेट अ रिस्पॉन्स. मतलब कि इसका प्राइमरी मोटो जो है वो क्या है कि किसी को या सामने वाले को क्या करना है, मोटिवेट करना है और उनसे रिस्पॉन्स लेना है. नेक्स्ट, कम्युनिकेशन मे बी फॉर्मल और इनफॉर्मल. यानी कि कम्युनिकेशन जो है वह फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है. और इसके बाद है, इट फ्लोज अप एंड डाउन एंड ऑल्सो फ्रॉम साइड टू साइड. मतलब कि यह जो है वह साइड बाय साइड भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, फ्लोज अप भी हो सकता है. और लास्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग. मतलब कि इसमें एक्सचेंज करते हैं हम, क्या करते हैं, अपने आइडियाज़, फीलिंग्स, इमोशंस, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा जो भी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं. तो ये पूरा प्रोसेस जो है यह कम्युनिकेशन में नेचर में देखा गया है. धन्यवाद.